मेरा नाम जिया दृषि, क्लास सिक्स्थ। मैं आज आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन था। इनके पिता श्री जैनुल आबिदीन मध्यम वर्गीय परिवार से थे। डॉक्टर कलाम ने 1950 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से BSc की परीक्षा पास की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर कलाम एक अच्छे वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक गंभीर चिंतक और अच्छे इंसान भी थे। 1953 से 1982 तक डॉक्टर कलाम अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में विभिन्न पदों पर काम करते रहे। 1981 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक होने के भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सोमवार 27 जुलाई 2015 की शाम मेघालय की राजधानी शिलांग में हृदयाघात के कारण डॉक्टर कलाम की मृत्यु हो गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार गुरुवार 30 जुलाई 2015 की सुबह 11 बजे तमिलनाडु के रामेश्वरम नगर में किया गया। डॉक्टर कलाम राजनीति से दूर रहकर भी राजनीति के सर्वोच्च शिखर विराजमान रहे। डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति होने के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। मैं आज आप लोगों को APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था तथा वह एक मछुआरे थे। इनकी माता एक गृहिणी थी। यह अपनी शिक्षा को निरंतर रखने के लिए अखबार वितरण करते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से इन्होंने BSc की। इन्होंने स्वदेशी और क्राफ्ट का मॉडल तैयार किया तथा उसका नाम नंदी दिया। इन्होंने नंदी, ब्रह्मोस, नाग, अग्नि आदि मिसाइलें बनाई, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न तथा पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेघालय की राजधानी शिलोंग में IIM के छात्रों को व्याख्यान देते हुए इस संसार को अलविदा कह दिया। धन्यवाद। Navin Malla from Rajasthan. I read in Pragyan classes in New Delhi. Today I tell about some facts for Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15 October 1931 in
Rameswaram, Tamil Nadu. He was born in middle class family. He was a main scientist and as an engineer worked in many important projects of defense research and development organization, DRDO, Indian Space Research Organization, ISRO. While working in ISRO, he played an important role. He played a significant role in the development of indigenous satellite launching vehicle SLV-3. Dr. APJ Abdul Kalam contribution in importantly missiles make in India. Dr. APJ Abdul Kalam, also known as Missile Man of India. He was the 11th President of India. He make many books apart from teaching. He tell some points about 2020. He died due to heart attack on 26 July 2015, Meghalaya, Shillong. Yeah. Good evening everyone. I am Samya and I am a student of Pragyan classes. Today I am going to describe my views about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15 October 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu, India. His full name was Dr. Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. His father, Mr. Jainulabdin, belongs to a middle class family. In the year 1950, Kalam passed a test of BSc in St. Joseph College, which is in Tiruchirappalli. He achieves aeronautical engineering degree from Madras Institute of Technology. In the year 1958, Kalam was appointed as the helpful senior scientist by DTD&P in Technical Center. From the year 1963 to 1982, he works on various posts in Space Research Committee. In 1981, Dr. Kalam was honored by Padam Bhushan on Republic Day by the Indian government. In the year 1990, he was honored as the Padam Vibhushan, and in 1997 he was honored as the Indian Top Citizen Respect Bharat Ratna. Dr. Kalam took an oath as the President of India on 25 July 2002. He was popularly known as the Missile Man. Dr. Kalam was died on Monday 27 July 2015 in evening in Meghalaya's capital Shillong due to a heart attack. Former President Dr. Kalam's last rites was done on full military form on Thursday 30 July 2015. Dr. Abdul Kalam was not only a great scientist but also a positive thinker and a good person. Dr. Kalam was not a politician but he seated on the top peak of politics. अरहम इदरीसी है। मैं प्रज्ञान क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक महान इंसान के जीवनी बताने वाला हूँ जिनका नाम अब्दुल कलाम है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलआबदीन अब्दुल कलाम था। इनके पिताश्री जैनुलआबदीन मध्य वर्गीय परिवार के थे। कलाम ने 1950 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी की परीक्षा पास की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। 1958 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने DTD और पी में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हुए। 1963 से 1982 तक अब्दुल कलाम ने विभिन्न पदों पर काम किया। भारत का 1981 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर अब्दुल कलाम को
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने के बाद 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2002 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सोमवार 27 जुलाई 2015 की शाम मेघालय की राजधानी शिलांग में युद्धकांड होने के से डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नगर में किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ गंभीर चिंतक और एक अच्छे इंसान भी थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम राजनीति से दूर रहकर भी राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान रहे। Good evening all of you. Myself Ajizat. Today I want to tell about myself. My name is Ajizat. I am from Rajasthan. I studied in Emmanuel Mission School, Ringas. I studied in 10th class. I am 15 years old. I am an average student and daily I take online classes from program classes by which I can solve my all problems easily. I like cricket very much. My favorite subject is math and my favorite color is blue. I want to make an Air Force officer and I love my country very much. Thank you. Good evening everybody. Myself Naveen Mala from class 9th. I am here to tell something about me. I am a boy. I am 15-year-old. I belong to Dadia Rampura. In holidays, I take online Pragyan classes. My father name is Mr. Saurmal Malawat. My mother name is Mrs. Dani Devi. In my family, there are 5 members. My school principal name is Mr. J.K. Thomas. My favorite teacher name is Mr. Jesra Swami. My class teacher name is Mrs. Krishna Batra. My favorite subject is math. My favorite color is blue and my favorite game is cricket. Always I tell truth and honest. Right. Thank you. Good evening everyone. My name is Manish Pajia. Today I am describing my views about APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was President of India from 2002 to 2007. He was born on 15 October 1931 at Rameshwaram, Tamil Nadu, India. His full name was Abul Pakir Jalaluddin Abdul Kalam. He is also known as Missile Man of India because he gave many missiles to India. He was 7 brothers and sisters and he was smallest in them. He got many awards such as Padam Bhushan, Padam Vibhushan and Bharat Ratna. He was scientist, professor and author. He was the 11th President of India. He was in the support of both Bharatiya Janata Party and Indian National Congress. His mother name was Asiyamma and his father name was Jalaluddin. He died on 27 July 2015 at the age of 83 in Meghalaya, Shillong. Hi guys, my name is Krishna Deva. I am a 9th grade student. My father name is Mr. Naresh Deva. My mother name is Miss Kanika Deva. I lived in Khananagar, Loni, Ghaziabad. I am studied to Holy Child Academy, Tonika City, and also I am studied to Pragyan online classes. My favorite subject is maths and science, and my hobby is playing games, and my favorite color is red. I am taking to Pragyan online classes. And also during the lockdown and complete my school homework with Pragyan tuition classes when the Pragyan online classes will be start offline. Thank you. Stay home, stay safe. Good morning all of you. Today I am telling about myself. My name is Manoj Bajia. I am 15 years old. I read in Emmanuel Mission Secondary School. My father name is Mr. Madanlal Bajia. He is an police officer. He do always hard work
My mother name is Mrs. Sita Devi. She is an housewife. My favorite subject is math and science. I want to become an engineer. My favorite game is volleyball and cricket. I am a good player of cricket. My favorite color is red. Thank you. Hello everyone. Today I want to tell you about myself. My name is Samya. My father name is Mr. Abdul. My mother name is Mrs. Afsana. I am 14 years old. My favorite subject is science. I study in class 9. My favorite game is Kho-Kho. My favorite color is pink. I take Pragyan classes from Mr. Pawan Kumar Goyal and Mrs. Gunjan Goyal. I like to go there. In this difficult time also, Goyal sir helps me by online classes. Thank you. Have a nice day. Hi guys, my name is Chia Drishi. I am 6th grade student. My father name is Harun Idrishi. My mother name is Shaheen Idrishi. I lived in Khananagar, Loni, Ghaziabad, UP. I am student of Springfield Convent Junior High School. I am also taking Pragyan online classes during the lockdown and complete my school homework with Pragyan tuition classes. When the lockdown stop, Pragyan education classes when start offline. Thank you for watching my introduction. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you so much. Please stay home and stay safe. Hi guys, I am Aram Idrisi. I am a boy. I am grade 9th student. My father's name is Harun Idrisi. My mother's name is Shaheen Idrisi. I lived in Khananagar, Loni, Ghaziabad. I am a student of Springfield Convent School and I am also taking Pragyan online classes during the lockdown period and complete my school homework with the help of Goyal sir and Goyal madam. When the lockdown stops, Pragyan classes will start offline. My hobby is playing cricket and reading adventure books. My favorite teacher is Sandhya ma'am. My favorite subject is maths. Thank you to listening my introduction on me and Pragyan education. Myself, Dusant Kumar Dhankad. I study in 8th class and I tell us something about my father name is Mr. Yogeshwar. My mother name is Mrs. Sarita Devi. In holiday I take Pragyan classes. My school principal name is Mr. Ajay Chaudhary. My favorite teacher name is Mr. Gajendra Dhaka sir. My class teacher name is Mrs. Puspa ma'am. My favorite color is red. My favorite sport name is race. I speak always truth. Thank you.